डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़पेपर आर्टिकल सीरीज़ में आज एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये आर्टिकल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो चलते हैं न्यूज़ आर्टिकल की तरफ और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान, डेनमार्क टू बूस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इन गिलगित बल्तिस्तान चित्राल। पाकिस्तान, डेनमार्क भी एक मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुल्क हमारा मुल्क है। टू बूस्ट बढ़ाएगा, फ़रोग़ देगा, तक़वियत देगा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले में मजबूत ज़राअत को इन गिलगित बल्तिस्तान में एंड चतराल में ये इन चीज़ों को फोकियत देगा, तक़वियत देगा। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। Is the impact of climate change have become annual threats, particularly in northern mountainous region. The Aga Khan Foundation (AKF) Pakistan and the Embassy of Denmark on Wednesday agreed to join hands to support climate resilient agriculture livelihood for vulnerable mountains communities in Gilgit-Baltistan and Chatral. Is the impact of climate change यानी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात में हैव बिकम बन चुके हैं एनुअल थ्रेट संगीन सालाना खतरात बन चुके हैं पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर इन द नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन जो शुमाली पहाड़ी इलाके हैं उनमें। खान फाउंडेशन यानी पाकिस्तान AKF पाकिस्तान एंड एम्बेसी ऑफ डेनमार्क ऑन वेडनेसडे बुध को एग्री टू जॉइंट हैंड्स यानी मिलजुल कर काम करने पर इत्तिफाक किया टू सपोर्ट मावनत करने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लाइवलीहुड यानी मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले में मजबूत मज़ाहिम ज़रिए जो तरीक़ाकार है या मुआश है उसको फॉर वर्नरेबल माउंटेन कम्युनिटीज़ फार के वर्नरेबल कहते हैं कमज़ोर या महकूम माउंटेन कम्युनिटीज़ यानी शुमाली इलाके में रहने वाले लोगों के लिए इन गिलगित बल्तिस्तान में एंड चतराल के। The initiative aims to strengthen food security and income stability by expanding access to diversified and sustainable agriculture opportunities. The initiatives जो इक़दाम है या जो कदम है aims to जिसका मकसद है हदफ है to strengthen मजबूत करना फ़रोग़ देना तक़वियत देना फूड सिक्योरिटी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को एंड इनकम स्टेबिलिटी आमदनी का इस्तेहकाम को एक्सपेंडिंग एक्सेस यानी रसाई को बढ़ाते हुए टू डाइवर्सिफाइड मुख्तलिफ अनवा के एंड सस्टेनेबल और पायदार एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना ज़रिए मौक़े फ़राहम करते हुए। It will support the adoption of climate smart and regenerative farming practice, improve water management system and promote locally viable green business models suited to mountains environments. It will support ये मददगार होगा the adoption of अपनाने में climate smart and regenerative farming practice यानी माहौलियाती तब्दीलियों के मुताबिक तजदीदी ज़रूरी तरीक़ों को अपनाने में इम्प्रूव बेहतर करने में वाटर मैनेजमेंट पानी के इंतज़ाम के निज़ाम को एंड और प्रमोट फ़रोग़ देगा लोकली वायबल मकामी सतह पर काबिल अमल
گرین بزنس ماڈل یعنی ماحول دوست جو کاروبار کے طریقہ کار کو سوٹڈ ٹو موضوع بنائے گا ٹو ماؤنٹین انوائرمنٹ یعنی یہاں کے باسیوں کے لیے جو یہ موضوع بنائے گا، اس طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ The project will directly benefit approximately 5,890 individuals across Gilgit-Baltistan and Chatral and up to 34,000 people indirectly, with an emphasis on equitable inclusion of women, youth, and marginalized group. The project یہ جو منصوبہ ہے will directly benefit یعنی یہ براہ راست فائدہ پہنچائے گا اپروکسیمیٹلی تقریباً 5,800 انڈیویجولس یعنی افراد کو اکراس گلگت بلتستان بر میں یا پورے گلگت بلتستان میں اینڈ چترال اور پورے چترال میں اینڈ اپ ٹو اور زیادہ سے زیادہ 34,000 پیپل انڈائریکٹلی یعنی ان کو بلا واسطہ فائدہ پہنچائے گا with an emphasize on اس بات پر خاص توجہ دی گئی ہے یا خاص زور دی گئی ہے the equitable inclusion of women یعنی اس میں خواتین کی جو شراکت داری ہے اس کو منصفانہ بنایا گیا ہے، یعنی ان کو برابر کا شرکت دار بنایا ہے، حصہ دار بنایا ہے، برابری کی تو جو ہے نا اصولوں پر مبنی ان کی شراکت کو لازمی قرار دیا ہے۔ یوتھ کی اینڈ مرجنلائزڈ گروپس جو محکوم جو طبقے ہیں جو پسماندہ طبقے ہیں ان کی پریزنٹیشن کو برابری کے جو ہے نا طور پر برابری کے لحاظ سے ان کو شامل کیا گیا ہے۔ The agreement was signed by Maja Dirovas Mortisen, Ambassador of Denmark, and Akhtar Iqbal, Chief Executive Officer of Aga Khan Foundation. یہ جو معاہدہ ہے یہ سائنڈ بائی یہ دستخط ہوا ہے کس کے ان ماجا ڈیرس مورٹیسن یہ کہ کون ہے ایمبیسڈر آف ڈنمارک ہیں اور جو اختر اقبال ہے کون ہے چیف ایگزیکٹو سی ای او ہے کس کے آغا خان فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ مس مورٹیسن announced that this marked the launch of third partnership with the Aga Khan Foundation Pakistan. Through this collaboration, we aim to strengthen the resilience of vulnerable communities in Gilgit-Baltistan and Chatral by equipping them with the tools and knowledge required for climate smart agriculture. The Danish Inve edit. Miss Mortison announced that this marked مس مورٹیسن نے ایسا بیان دیا کہ دا لانچ آف آغاز میں آف تھرڈ پارٹنرشپ تیسری جو شراکت داری ہے ود آغا خان فاؤنڈیشن آف پاکستان کے ساتھ یہ ان کی تیسری شراکت داری ہے۔ تھرو دس کولیبریشن اس تعاون کے ذریعے وی ایم ٹو اسٹرینتھن ہمارا مقصد ہے یا ہمارا ہدف ہے مضبوط بنانا دا ریزیلینس ولنریبل کمیونٹیز لچک کو مضبوط بنانا ولنریبل کمیونٹیز جو محکوم طبقے ہیں ان کو مضبوط بنانا ان کا مقصد ہے ان گلگت بلتستان جو کہ گلگت بلتستان اور چترال میں ہے بائی ایکویپنگ ان کو مہیا کرتے ہوئے with tools وسائل یا آلات and knowledge اور علم required for جو کی ضرورت ہے climate smart agriculture یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی کے مطابق زرعی جو آلات یا طریقہ کار ہے طریقے بنانے کے لیے ضروری جو آلات اور جو علم ہے اس کو فراہم کیا جائے گا۔ دا ڈینش انوے ایڈٹ یعنی دا ڈینش انوے کہتے ہیں سفیر کو یا نمائندے کو، یہ ڈنمارک کا جو سفیر ہے اس نے ایسا کہا۔ She said a key pillar of the project was the empowerment of women and youth, ensuring their
equitable participation in climate resilient development and sustainable livelihoods. She said, उन्होंने कहा, a key pillar of the project, ये कि मंसूबे का जो अहम सुतून था क्या था, द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ, यानी एम्पावरमेंट कहते हैं बाख्तियार करना, खुद मुख्तारी देना, ऑफ वुमेन एंड यूथ, औरतों और जवानों को, इंश्योरिंग यकीनी बनाना, देयर इक्विटेबल पार्टिसिपेशन उनकी मुनसिफाना शराकत दारी, इन क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट में, क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट यानी मौसमियाती लचक के फ़रोग के अमल में, एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड और पायदार ज़रिया मुआश में, इनका बराबरी को हक देना उनका जो है ना मेन मकसद है। The initiative will also support community-owned water and natural resources management system with the aim of developing practical and replicable models for resilient mountain agriculture. The initiative will also support community-owned water and natural resource management system. ये इकदाम कम्युनिटी के ज़ेर इंतज़ाम पानी और कुदरती वसाइल के निज़ाम की भी मावनत करेगा, with the aim of developing practical and replicable models for resilient mountain agriculture. इसका मकसद मौसमी एतबार से मजबूत ज़राअत के लिए अमली और दोहराए जाने वाले तरीक़ेकार तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। ये आज के मुश्किल अल्फाज की वर्ड्स मीनिंग, मुश्किल अल्फाज के मानी है। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।